So Uttar Pradesh is all set for a global collaboration and investment with Shri Manoj Kumar Singh, who is the Chief Secretary of Uttar Pradesh, talked into an exclusive interview with our Managing Editor and Chief Business Officer, Times Network, Mihir Bhatt. Let's listen into this exclusive conversation. स्वागत है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में। हम इस समय दावोस में हैं, उत्तर प्रदेश पेविलियन में, और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी श्री मनोज कुमार सिंह हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका टाइम्स नेटवर्क में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये जो समिट है वो तो हर साल होती है और हम देखते हैं कि उसमें कई मात्रा में लोग आते हैं, लेकिन उसकी तुलना कुंभ से नहीं की जा सकती। फिर भी यहाँ पे हम कई बार देखते हैं कि जो व्यवस्था है वो काफी एक तनाव पैदा हो जाता है वहां पर। तो कुंभ में इतने बड़े स्केल पर आयोजन करने के बावजूद अब तक काफी स्मूथली चला है सब कुछ। ये कैसे अचीव किया गया है? ये 2019 से ही इसकी एक नींव डालनी शुरू की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और जब इतना बड़ा गैदरिंग होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है वो सैनिटेशन का होता है। इसी से सब कुछ बनता है या बिगड़ता है। सैनिटेशन अगर अच्छा नहीं है तो लोग कभी भी उसको सराहेंगे नहीं। तो 2019 के कुंभ में ये टारगेट था कि सैनिटेशन बहुत अच्छा किया जाए। तो बिल्कुल ओपन डेफिकेशन फ्री किया गया था और लगभग 1,14,000 सैनिटरी टॉयलेट्स बनाए गए थे और उसमें नीचे टैंक, सिंटेक्स टैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस बार उनकी संख्या बढ़ाकर 1.5 लाख की गई है और लगभग 12,000 सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं। दूसरा फीचर सिक्योरिटी का होता है। सैनिटेशन है, अगर सिक्योरिटी अच्छा नहीं है तब भी लोग अप्रिशिएट नहीं करते। बिल्कुल। तो इस बार काफी लंबाई में, यानी 12 किलोमीटर की लंबाई में घाटों का निर्माण किया गया है। पिछले कुंभ तक ये 8 किलोमीटर हुआ करते थे और इसकी वजह से दोनों तरफ लगभग 24 किलोमीटर का दायरे में लोग स्नान कर सकते हैं। तो जो जिस दिशा से आ रहा है, मिर्जापुर से आ रहा है, कौसाम्बी से आ रहा है, वो अपने ही डायरेक्शन में जो सबसे पहला घाट पड़ रहा है वहां पर वो स्नान कर सकते हैं। एक लालसा लोगों को रहती है सबको संगम तक आने की, और ये हम लोगों ने देखा कि जो पौष पूर्णिमा था और मकर संक्रांति, तो उसमें काफी भीड़ संगम पर आ गई थी। हम लोग ये पूरी तैयारी करते हैं तो बेसिकली मौनी अमावस्या को ध्यान में रखकर करते हैं, क्योंकि वो 7 करोड़ 8 करोड़ लोग उस दिन आएंगे। तो बेसिकली ये जो हुआ मकर संक्रांति में, ये एक रिहर्सल सा हुआ उसका। हाँ। क्योंकि पौष पूर्णिमा में जो लोग आए 13 को वो लौटे नहीं, तो 13 और 14 दोनों मिलकर एक अच्छी खासी भीड़ हो गई, लगभग 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोगों की। तो ये सैनिटेशन, सिक्योरिटी और इस बार एक डिजिटल कुंभ का भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्शंस दिए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको इम्प्लीमेंट भी कराया है। उसमें यह है कि लोगों को जो सुविधाएं दी जाती हैं, जो अखाड़े आते हैं और बाकी जो संस्थाएं आती हैं, तो उनको लैंड अलॉटमेंट से लेकर सारी सुविधाएं वो डिजिटल फॉर्म में उनको अप्लाई करना है और दिया गया, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। खोया पाया वो भी पूरा QR कोड की वजह से चलाया जा रहा है। मेला क्षेत्र में लगभग 3,000 कैमरे लगे हैं और 3 इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर्स हैं, जहां से पुलिस और प्रशासन के लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो इस तरह से सैनिटेशन, सिक्योरिटी और डिजिटल कुंभ इस कुंभ को बहुत ही दिव्य और भव्य बना रहा है। दावोस में एक चीज देखने को मिलती है, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, एक तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काफी काम हो रहा है, तो जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसके सुधारने में काफी ज्यादा मेहनत और निवेश दोनों ही जा रहा है उत्तर प्रदेश में। दावोस जैसी जगह पे ये होता है कि उन परंपरागत कंपनियों के साथ साथ अब जो न्यू एज कंपनीज होती हैं, चाहे वो IT, AI, ब्लॉकचेन, इन सब टेक्नोलॉजी से जुड़ी भी ग्लोबल कंपनीज के साथ आप रूबरू हो सकते हैं। तो उनसे किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? ये एक बहुत ही स्टैब्लिश प्रैक्टिस है और सोच भी है हमारी कि एग्रीकल्चर से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, फिर सर्विसेज में जाते हैं। पूरी दुनिया ने ऐसा ही किया जो आज की तारीख में विकसित है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो एग्रीकल्चर है वो दुनिया के एग्रीकल्चर से बहुत अलग है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में भी मेजर इन्वेस्टमेंट हो और अब हम एग्रीकल्चर को दूसरे लेवल पर ले जाएं। अभी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। हम लोग जेवर एयरपोर्ट के पास ये बना रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए जोन, जिसमें कि दुनिया में कहीं भी एक्सपोर्ट करने के लिए जो ट्रीटमेंट चाहिए, जो टेस्टिंग फैसिलिटी चाहिए, वो एक जगह हो और सारे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, खास करके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वहां से एक्सपोर्ट किया जा सके थ्रू कार्गो प्लेन। अब दूसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर की है। आज की तारीख में देश में जितना एक्सप्रेसवे है उसका 40% हम लोग के पास है और ये गंगा एक्सप्रेसवे पूरा होते ही ये लगभग 55% एक्सप्रेसवे होगा। अभी नए एक्सप्रेसवे भी उनकी नींव पड़ने वाली है, कुछ दिनों में आप खबर सुनेंगे इसके बारे में।
तो एयर कनेक्टिविटी, रोडवेज के लिए एक्सप्रेसवे और इस तरह से हर इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में काफ़ी मेजर इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी बड़े पैमाने पर काम हो रहा है और उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसने एक एक्सक्लूसिव पॉलिसी बनाई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए और फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लिए। यूपी में लैंड कम है, एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव है, इसीलिए महंगा है। बाकी कई जगह बहुत सस्ते में लोगों को ज़मीन मिल जाती है इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो हम लोगों ने एफडीआई और फॉर्च्यून 500 में कंपनीज को 75% सब्सिडी पर लैंड देने के लिए ये एक पॉलिसी बनाई है। और इसमें सबसे पहला जो कंपनी आया है फूजी सिल्वरटेक, जो यमुना में है। फिर अशोक लेलैंड पहली बार साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में आया, वो इलेक्ट्रिक बस बनाने के लिए। तो इस तरह की कंपनीज को हम लोग अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इनके लिए पॉलिसी भी बना रहे हैं। अब न्यू एज जो टेक्नोलॉजी है उस पर काम करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जा रहा है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में, और उसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया गया शुरुआत करने के लिए। बट उसमें बहुत मेजर प्लेयर्स के साथ एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है और सैमसंग है, जिनके साथ मिलकर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने जा रहे हैं। और इसमें कई बड़ी कंपनीज इन्वेस्टमेंट भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा इलाके में कर रही हैं। Now let's take a sneak peek at Davos 2025 with the central theme being collaboration for the intelligent age. As Mirek Dusek, who is the managing director of WEF, had a very engaging one-on-one discussion with Mihir Bhatt, managing editor and chief business officer, Times Network. Listen in. How do governments, especially governments of the developed economies and let's say organizations like World Economic Forum, can ensure that the benefits or the dividends of the emerging technologies are available equitably to even emerging economies and countries? This is a crucial question. The concept of the intelligent age, you articulated it very nicely now, because it is not one technology, a whole sets of technologies that are exponentially going to market and changing industry and society. And going back to the notion of agency, how do we, as civil society players, as governmental players, of course business as well, how do we have a sufficient agency in shaping how these technologies actually pan out? And so you may be familiar, there's a term agile governance. It's been around, particularly in tech circles, for some time, but in our view, that's actually the time right now to really think through, are we equipped? And if we talk specifically about governments, are governments equipped right now with the resources, but also with the mindsets and the procedures to be able to really be on the front foot and shape this? And of course, the other complication we have is that you are seeing in this fragmented world that there is a risk that certain technologies, and we're already seeing it playing out, are actually considered to be more a vector of competition. Correct. Trying to get supremacy. Some people are using the word supremacy in terms of certain technologies. And so, of course, that is also something that maybe certain instincts are there, but how are we nuanced enough around this? And how can we maintain a sense of agency in this environment? And just to say one last thing on this, it is tough, but at the same time, we saw what happened at the United Nations in September with that UN initiative around, at least, for example, do the first installment, which is this scientific body that they got agreement on from all nations, scientific body that can tell us what is the state of AI, so that at least we have certain, hopefully, objective data to be based upon. But it is, of course, going to be hard work. And again, back to the point of how do we reimagine cooperation, multilateralism for the 21st century. Right. Mirek, also, I mean, India remains the fastest growing large economy in the world at this point. In a fragmented sort of economic world right now that we are witnessing, what is your expectation from a large economy like India? What role it can play to increase collaborative efforts as far as global economic development is concerned? I think powers like India play a very important role because we, as someone else puts it, we have multipolarity. I mean, that's, I think everyone would agree that we have that.
And again, the muscle of multilateralism, the architecture is maybe not as strong or as equipped. And it is really through actors like India that can actually, right now, it's a perfect time to actually be creative together and also show leadership in terms of, okay, what kind of collaboration do we need? And obviously, with the size of the economy of India and the diplomatic heft, it is actually a pivotal time for countries and powers like India to be able to shape the future of multilateralism, and they're doing it. And we are seeing, of course, a lot of new configurations emerging. Of course, we're seeing BRICS also growing, but all kinds of new configurations emerging. Also, at least some would say that we should look at some cases of regional collaboration. And if we take Africa, for example, we have the African Free Trade Continental Area, which shows a huge promise. We're seeing great momentum in ASEAN. And so it's also looking at possible archetypes in regions that can then help with restarting some of that muscle that we need for collaboration going forward. On global level, we have various challenges right now. There is climate change, there is energy security issue, regionalization in terms of, different thought, I would say, thought processes driving a particular policy or an agenda at a national level. And then you have new administration in US also coming in. In this kind of a challenging, or I would say, scenario where there are a lot of headwinds, how efficiently an agenda like collaboration can be implemented? So, would you be concerned about the emerging headwinds, I would say? Yeah, no, I think I would say we have no choice but to be on the front foot, have agency, and think hard about how can we get things done in this new world economy. And so this is the spirit that we have. We actually, in a way, go back to the roots of this organization, the World Economic Forum, which was back in the 70s already. The spirit was, through this impartial global platform, we play a critical role in getting different regions and stakeholders within society to exchange views, to be able to define common future. And now you mentioned fragmentation or headwinds. So that function, in a way, going back to our roots, could not be more important. So we're kind of reinforcing that, putting it on the agenda again. And we think we have no choice but to offer this and have that spirit of being on the front foot and be solutions oriented. Right. The biggest opportunity that world economy has today, and one biggest threat that world economy faces today, according to you? The biggest opportunity, I think, of course, you could argue many. We are putting on the agenda here with the intelligent age, the fact that those technologies, undeniably, economists would agree, undeniably these technologies can help us with productivity growth, so huge potential for the world economy at a time when, as you know, the latest IMF figures are below trend growth, 3.3 2 years upcoming. But of course, so that, but if I just stay with that, but then of course we work a lot on ethical use of these technologies. We work a lot on risks that are involved. We discussed a little bit the risks that are related to complicated geopolitics, but obviously there are all kinds of risks that we all know, and I would like to end with that. It is the ability to be on the front foot vis-a-vis these technologies, really thinking through the implications is very important, because the difference right now is that the complexity and the pace, particularly with AI, is unprecedented. Now it's a comeback to the world stage for Kerala. Nearly after 19 years, Kerala is attending the WEF, which is the World Economic Forum, in Davos, Switzerland. My colleague Shrija MS brings us the report on the 7-member delegation promoting the state as the next investment destination. It's a crisp morning here
here in Davos, Switzerland, and we are here to bring you a special comprehensive coverage where the Kerala delegation has made their visit, which means they have made a return to the World Economic Forum after a really long time, which is nearly 19-year hiatus. We see that Kerala has made this return back in 2006, which was under the leadership of late Chief Minister Oomen Chandy, and this time around we're looking at a 7-member Kerala delegation led by Minister P. Rajiv, who's also the Law Minister and Industries Minister of Kerala. In the next few days we're going to see a flurry of engagements with global investors, and more importantly we have to look at their focus sectors, be it AI, robotics, and also majorly to do with their IT sectors as well. Here's what we learned from speaking to the Minister P. Rajiv. He also went on to talk about how the next few days is going to be very busy for the Kerala delegation. We are hosting the Invest Kerala Global Summit on February 21st and 22nd. This is the right place to meet the most influential investors at a single point. That is why the delegation consisted of the Chief Secretary, Finance Secretary and Industry Secretary and myself. We are coming here to meet the investors one-to-one and also having certain roundtables with investor community. What's your word to the investors? We are already published our industrial policy 2023 and we are elaborating the potential of Vidinyam, the Palakkad Industrial City and Kochi IT corridor. We are trying to showcase all these things to them, and I think it's a good start for the state of Kerala because we are the number one in ease of doing business of the country now. So Times Network is in Davos, Switzerland, continuously getting you the updates coming in from the World Economic Forum 2025.